सो डेल्टा एम सी करना लास्ट क्लास में. डेल्टा एम इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. वंस न्यूक्लियस बनने के बाद उसका मास इज गेटिंग डिक्रीज, द डिफरेंस को वी कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. ओके. एंड मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? when x element is their atomic number z and mass number is a, so what will be the mass number delta m का formula? z into mp plus a minus z into mn. These are what? Mass of nucleons. Protons का total mass, neutrons का total mass minus mass of the nucleus. Nucleus means they will give the value mass of the nucleus. For helium is 4, ऐसा देगा. Subtract करना पड़ेगा. This is the delta m. Okay, mass defect we learned. Okay, now whenever there is a mass defect is happening, there will be a energy is getting released. That energy ko we call as binding energy. Who has given? Einstein has given, right? So likho binding energy. Binding energy, amount of energy released during the formation of nucleus. When the nucleus is forming, how much amount of energy is getting released? That is called as binding energy. Or I can tell amount of energy required to separate the nucleons from the nucleus. Okay, suppose nucleons are there. Okay, amount of energy released during the formation of nucleus. Nucleus बना है. So 3 protons, 3 neutrons, right? Okay, जब energy, that energy is called as binding energy. Okay, or I can tell the amount of energy required to separate nucleons from the nucleus. अगर I given a nucleus, उसको मुझे binding energy, कौन सा binding energy? अगर मैं binding energy दूंगा इसको, it will the break करके we can separate this as the this like this. We can separate from the nucleus. Separate from the nucleus means a force of attraction से बाहर खींच रहे. Okay, that energy को we call as binding energy. Both are same only. Okay, sometimes amount of energy required to separate बोलते हैं, indirectly we have to find binding energy only. Okay, and binding energy का formula है. What is the formula for binding energy? You know mc square वाला याद है ना? Binding energy का formula है delta m into c square. mc square, right? Energy, binding energy is energy. So delta m का z into mp plus a minus z into mn minus mx into c square. This is the binding energy. बट देखो वी विल सी, इसका थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला लर्न करेंगे. हो गया कवर? ओके. now देखो सपोज फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएट विथ मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU. अगर मास डिफेक्ट 1 AMU हुआ, then what will be the binding energy is coming out? We want to calculate binding energy का formula we learned. What is the formula? Delta m into c square. Directly अभी delta m दे दिया 1 AMU बोल के. Okay, into c square चाहिए. Okay, so 1 AMU means how much kgs? 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg into 3 c square is 3 into 10 to the power of 8 whole square. But I want in mega electron volts, like electron volts में चाहिए. So क्या करेंगे? Divide with 1.6 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 electron volts में चाहिए. But I want in mega electron volts. Mega electron volts चाहिए बोलता into 10 to the power of 6 I'm adding, so that I'll get in electron volts, mega electron volts में. Okay, so if you calculate approximately binding energy कितना आएगा? 931.5 mega electron volts. This is for mass defect of 1 AMU. अगर mass defect of 1 AMU हुआ 931.5. You tell me, for mass defect of 1 AMU, I'm talking about mass defect of 1 AMU, how much binding energy is getting released? It is 931.5 mega electron volts. Suppose if I
मास इफेक्ट ऑफ 2 AMU कितना होगा? 2 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस मच एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड. मास डिफेक्ट इंक्रीज हो रहे तो बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीज्ड. सपोज मान लो इफ द मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम AMU, so what will be the binding energy? Delta m times 931.5 mega electron volts. That means अभी से formula binding energy का formula you have to use this one, delta m into 931.5, and answer is in mega electron volts. This is the binding energy. देखो 931.5 mega electron volts and delta m is in AMU. सपोज डायरेक्टली मास इफेक्ट दे दिया, सब्स्टिट्यूट करो इंटू 931.5 करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा. अगर मास इफेक्ट नहीं दिया, एलिमेंट दिया, यू हैव टू यूज दैट जेड इंटू MP प्लस ओ करके सॉल्व करना पड़ेगा. इसका कैलकुलेशन आपको पेशेंस से करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे मास इफेक्ट इज नॉट लाइक केजीज मास इफेक्ट नहीं होगा. माइन्यूट में 0.000356 ऐसा ऐसा रहेगा. ओके, उस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज ऑलवेज व्हेन यू आर यूजिंग हियर. हियर मास इफेक्ट में आपको जोल्स में आएगा नॉर्मल इफ यू गेट द थिंग, बट मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए बोलते 1.6 से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज दिस वन, डेल्टा m इंटू 931.5. चलो, नो इसका क्वेश्चंस करेंगे. ओके, कवर्ड. ओके, इसके पहले एक क्वेश्चंस करेंगे, सम क्वेश्चंस. Calculate the binding energy of the nucleons iron 26, 56. Element is given. I want binding energy of this one and in mega electron volts में चाहिए, and the given mass of hydrogen 1.007825 AMU and mass of neutron the given as 1.008665 AMU and mass of the iron, मतलब mass of the nucleus only. This is directly the given mass of the nucleus 55.934939 AMU. Yes, and you know 1 AMU is this much, 931.5. He's asking find the binding energy of the this atom. Element is given, atomic number, mass number is given. You can find the binding energy. Calculate करो. So binding energy का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा m into 931.5. Answer is in mega electron volts. देखो श्रीराम, डेल्टा m कैलकुलेट करो बाय यूजिंग द फार्मूला z into mp. z is atomic number is 26, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा 56 minus 26 ऐसा करके, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज दिस वन. So the nearly 466. What 406? Final answer.
रॉन्ग। कैलकुलेटर अच्छे से कैलकुलेट भाई, और फास्ट फास्ट कर क्यों कर रहे हैं? कैलकुलेटर यूजिंग मल्टीप्लाई करने के लिए पक्का आने आंसर आने का, बिकॉज ऑप्शंस में परफेक्ट रहेगा। So the final answer we multiply by 931 into यस 0.5. 931.5 करने का, डेल्टा एम इंटू डेल्टा एम कितना है? So 0.528461 परफेक्ट। एम into, right, इंटू into 931 पॉइंट, या so delta m की जगह में z into mp, see mass of proton and mass of hydrogen is same, plus a minus z into mn minus mx, okay, into 931.5 megajoule. so 482.241425. 492.26 approximately, 492.26 megajoule. श्रीराम, z के लिए what you will put, tell me z, श्रीराम बोलो। z is 26. 26 into mp is how much? Mass of proton. Mass of proton is how much? Mass of proton or hydrogen is same, I do right? Hydrogen has one proton. So this into this one. Okay. Plus A minus Z is how much? A minus Z. 56 minus 26 is how much? Bola. 30. 30 into Mn. Mn is given directly. Minus M nucleus का mass है. Nucleus का mass this one है. Element का mass is nucleus का mass. Perfect number नहीं रहेगा, इतना रहेगा. If you subtract, you will get delta M as 0.528461 AMU. This is a mass defect. And binding energy आपको क्या करने का, into 931.5 करने का, you will get as binding energy is 492.26 megaelectronvolts. You think? Okay. Now same thing में you tell me, calculate Bismuth 83209, इसका कैलकुलेट करो पूरा बाइंडिंग एनर्जी।
And mass of bismuth is given to you. Mass of the bismuth, मतलब न्यूक्लियस का मास है 208.980388. So that's 209, right? The atomic mass. किसका? Bismuth 209. हाँ, bismuth 209 only, but आपको at न्यूक्लियस का मास if you calculate exactly like this आएगा. तो ये लेने का इसका ये पॉइंट whatever the given that one you should take न्यूक्लियस का मास.
Is the Delta M. final delta M is 1.760877. Yes. Where has it come? 1.760877 AMU. Okay. And iska binding energy? So 1640.2477. Yes, perfect. Perfect answer. 1.760877 AMU. And binding energy is delta M into 931.5 multiply किया तो 1640.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो आपको ऐसा इक्वेशंस भी दे सकते हैं और ये भी मास भी दे सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला तो सेम है बाइंडिंग एनर्जी का. ओके चलो नेक्स्ट विल गो फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ओके. और देखो binding energy of the heavy hydrogen, they calculated experimentally that binding energy is 1.1 mega electron volts and that of uranium is 1800 mega electron volts. So from this what we can conclude, tell me? As the mass is increasing, the binding energy is increasing, right? Yes, binding energy increases with the increase in mass number. Yes or no? Yes, answer is right. Okay, so binding energy increases with mass number. Now coming to the stability, which is more stable? Iron of binding energy they given as 492 megaelectron volts and uranium 1800 megaelectron volts. Which is more stable? बोलो सदिक. अरे बोलो शर्मा रे क्यों? श्रीराम बोलो which is more stable? ज्यादा binding energy is there 1800 megaelectron volts and इसमें कम binding energy is there. Which is more stable? ऐसा ऐसा बोले तो क्या क्या करेंगे? आयरन ना बाइंडिंग एनर्जी इसका यू नो यूरेनियम है आयरन विच इज मोर स्टेबल Uranium. यूरेनियम. ओके बट आंसर इज रॉन्ग. ओके सो क्या होगा देखेंगे. सो वी कैन नॉट से स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी. Okay, so which one is a thing? Reality, this is more stable. Iron is more stable. Okay, why? Which is the basic criteria? Binding energy per nucleon is the important thing. Binding energy nahi hai, binding energy per nucleon we will calculate. Copy down. So iron ka if I take iron ka, iska binding energy they given as how much? 492. Nucleons is how much? 56. So calculate binding energy per nucleon for iron. So 492 by 56 per nucleon number, right? Nucleon number. If you calculate approximately, you will get as 8.8 mega electron volts. Okay. Similarly, binding energy per nucleon you calculate for uranium. So कितना होगा 1800 mega electron volts upon this nuclear number is 238. So approximately you will get as 7.5 mega electron volts. Now, more the binding energy per nucleon, more the stability. So, stability depends on binding energy per nucleon. Direct relation. More the binding energy per nucleon, they will give two elements. They will tell which is more stable. Don't see the binding energy. Binding energy per nucleon is the deciding factor. Now, what they have done is they took most of the elements and they calculated the binding energy per nucleon and they drew the graph. Okay, binding energy per nucleon versus mass number. Okay, copied. Okay, so they drew the graph
ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसा आएगा, ग्राफ लाइक दिस। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द मास नंबर। द ग्राफ फॉर हाइड्रोजन का इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतना है अप्रोक्सीमेटली, लिथियम इतना है, हीलियम इतना है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का दे ड्रू। ओके यूरेनियम इज दिस वन। देखो आयरन का इफ यू सी इट इज अप्रोक्सीमेटली देखो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हिच वी कैलकुलेटेड, these are binding energy per nucleon only, and uranium ka if you see it is 7.5 mega electron volts, this is for uranium binding energy per nucleon। ऐसा we get the elements like this। इसमें से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? आयरन इज द सबसे ज्यादा मोर स्टेबल वाला एलिमेंट है। एंड द एटॉमिक मास नंबर्स आर फ्रॉम 50 to 80 में द एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। 50 to 80 एलिमेंट्स मास नंबर का आपको एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल है। ओके स्टेबिलिटी वाला स्टेबल न्यूक्लियर बोलते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर। नाउ देखो, नाउ यू अंडरस्टैंड मोर, मतलब as we go along the x axis the mass number is increasing or decreasing? Mass number is increasing, right? Okay, all elements want to be stable nuclei only, this side elements and this side elements want to be stable nuclei। now yes a bigger mass number का it want to get stable, then क्या होगा? ये बिगर मास का एलिमेंट शुड ब्रेक द एलिमेंट, उसका मास नंबर डिक्रीज करने का, राइट? उसका मास नंबर डिक्रीज करने का, सो दैट्स व्हाई इट विल स्प्लिट इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस टू गेट इनटू दिस रीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। फिशन, न्यूक्लियर फिशन। ओके नाउ लेसर देन लेसर मास नंबर क्या होगा? ये वाला एटम है, ये इट वांट टू इंक्रीज द मास नंबर टू गेट इनटू दिस टेबल। ओके इंक्रीज मास नंबर, सो ये वाला दूसरा मास से कंबाइन होगा एंड एक बड़ा वाला बनाएगा, मास नंबर इंक्रीजिंग, एलिमेंट विल चेंज, राइट? दैट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबाइनिंग, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड टुमारो लिख रहे हैं ना मॉडर्न फिजिक्स, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स इंपोर्टेंट टेस्ट, 3 चैप्टर्स टुमारो, पक्का पढ़ो, नाइट तक रहेगा ना, पूरा डे पूरा रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स फिनिश कर दो। And after nuclei, I will start the papers. We'll start the papers first. Okay, बीच में I will teach the semiconductors and wave optics का। सादिक फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं? Yes, sir. Which chapters we finished? Random है वो रैंडम गए तो नहीं आएगा, रैंडम बोल तो कौन से चैप्टर से, नाम्स क्या है उसका, थोड़ा प्रोसेस करो। कभी भी स्टूडेंट में लाइफ में ऐसे लगेगा आपको, व्हेन एवर यू फील वन चैप्टर, नो 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 इस चैप्टर नहीं, कोई भी एक चैप्टर करो, एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा। सो ट्राई टू सिट एंड प्रॉपरली डू द क्वेश्चंस। व्हेन आई शुड टेक दिस वन पेपर, ये तो कल तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो दिस ट्यूसडे विल स्टार्ट, एक पेपर कर लिखेंगे, एक पेपर फर्स्ट ईयर का, और साढ़े बेटर है। Saturday, yeah. हाँ ठीक है, साढ़े तक बेटर है। आई विल ट्राई टू ट्यूसडे में आई विल ट्राई टू टेक द कंप्लीट 12th क्लास का फॉर्मुला शीट्स आपके पास है ना? आई विल ट्राई टू आस्क कंप्लीट 12th क्लास का फॉर्मुलास, कंप्लीट 12th क्लास दम में तो चैलेंज करके देखो। ट्यूसडे 4 days है गिवन। ओके सो आपको साढ़े साढ़े मतलब साढ़े संडे मंडे ट्यूसडे, ओके ट्यूसडे इवनिंग में आई गोइंग टू आस्क द कंप्लीट 12th क्लास फॉर्मुलास। आई विल टेक माय फॉर्मुला शीट इन माय नोटबुक के ओनली, एक्स्ट्रा फॉर्मुला नहीं चाहिए, जो भी मैं प्रिंट आउट दिया ट्राई टू बाय हार्ट। आई विल आस्क गो ऑन आस्किंग द फॉर्मुलास, देखते हैं हु विल विन बोलते हैं। सब देखो मरे उस काम में बैठे तो आई कांट डू एनीथिंग। ओके आई विल कीप क्विज। ओके कॉपीड, ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कहानी जो जो अभी तक बोला दैट विल राइट। ओके सो राइट डाउन from 50 to 80 binding energy per nucleons are stable, from 50 to 80 elements का binding energies are stable, and 56 binding energy is 8.8 which is the highest binding energy per nucleon, so iron is more stable element always, hence most stable nuclei बोलते हैं इसको। why? binding energy per nucleon is more।
ओके चलो नेक्स्ट फ्रॉम ग्रेटर देन 80 वाला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिक्रीजिंग slowly from A to the date it reaches to binding energy 7.6 तक जाएगा and the nucleus is unstable. To undergo nuclear fission to gain stability, they are undergoing nuclear fission to gain stability. Fission means breaking and undergo stability. And lesser than 50 वाला क्या हो रहा है? Binding energy per nucleon is decreases from binding energy values are given. These lighter nucleus are unstable. To get stability, what it will go? It undergo nuclear fusion to gain stability. लिख लो. No, हम लोग सेपरेटली वी आर डीलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया तो चैप्टर डन सक्सेसफुली. लास्ट टॉपिक है दैट तो फ्यूजन ज्यादा है, फ्यूजन तो कुछ नहीं है. न्यूक्लियर फ्यूजन सुना है टॉपिक फ्यूजन व्हाट इज दैट वेयर वी यूज दैट वन फ्यूजन. अरे नवंबर 15 है ना आज. ओ ओनली 1 मंथ है, 1 मंथ जनवरी में आ रहा है ना. यस ओके चलो विल सी न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, कैसे है, किधर यूज करेगा. शॉर्ट फॉर्म में लिखो उतना जरूरत नहीं. वो अनस्टेबल है ये वाला. टू गेट न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इसमें. ग्राफ में समटाइम्स दे विल शो मेंशन राइट साइड वाला फ्यूजन है, लेफ्ट साइड वाला फ्यूजन है, ऐसा चेक करना पड़ेगा आपको. राइट साइड इज फ्यूजन, लेफ्ट साइड इज फ्यूजन. तो हम याद है ना ट्यूसडे को फॉर्मुलास एंड टुमारो टेस्ट फॉर मॉडर्न फिजिक्स. इसलिए कनीसम दैट मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट कर लो. सेमीकंडक्टर्स आई विल नॉट आस्क, वेव ऑप्टिक्स आई विल नॉट आस्क. अदर देन दैट आई विल आस्क कंप्लीटली. सेमीकंडक्टर्स में बीच में वन क्लास में डिजिटल सर्किट्स विल डू एंड वन मोर क्लास में थियरिटिकल करने वाला है, फुल थियरी उसमें. डन चलो देखो इस तरफ वाला फ्यूजन हो रहा है, इस तरफ वाला फिजन हो रहा है, राइट. तो मालूम. नाउ न्यूक्लियर फिजन, फिजन के बारे में करेंगे. ओके यू नो फिजन मींस ब्रेकिंग. ओके देखो व्हाट इज हैपनिंग फिजन में. इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन विच हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर. कंप्लीट न्यूक्लियर फिजन पढ़ने वाला है पूरे डिटेल में करना. कैलकुलेट इधर एक कैलकुलेशन भी आएगा, वी विल सी ऑन द वीडियो साथ. It is a nuclear reaction in which heavy nucleus splits into two or more lighter nucleus. And most of the nuclear fission is binary. So क्या होगा? This is a heavy nucleus. Heavy nucleus splits up into two or more lighter nucleus. Splits up into two or more lighter nucleus. Two or more lighter nucleus. This is called as nuclear fission. Okay, why it is splitting? Because इसमें binding energy per nucleon is less है. तो स्प्लिट अप क्या करने का? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करने का. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को वी आर इंक्रीजिंग सो दैट इट विल फॉल ऑन दैट कैटेगरी में. वो स्टेबल न्यूक्लियस में गिरने के लिए दिस एटम वांट टू ऑलवेज स्प्लिट्स एंड मेक द मास नंबर डिक्रीजेस. ओके एंड दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एक्चुअली दे रिमूव दिस चैप्टर. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोल के रिमूव पूरा. ओके एंड मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इज बाइनरी, मतलब देखो 2 लाइटर न्यूक्लियस and 4 out of 1000 is tertiary wala. Okay, three nucleus we'll call, and this is called as बड़ा वाला को parent nuclei and this ये दोनों को daughter nuclei. देखो इधर भी daughter बोल के बोल रहा है, सन का नहीं बोल रहा है. ऑलवेज समथिंग ये लोग ऐसे ही करेगा ऑलवेज. ओके daughter nuclei. And most of the time the daughter nucleus are comparable in mass, so almost mass will be same almost में. Okay, daughter nucleus को.
नो, फिजन होने के लिए वन तो ऑटोमेटिक होने वाला एलिमेंट्स आर देयर, ऑटोमेटिक का होगा, एलिमेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि स्पॉन्ट, मतलब जल्दी जल्दी 1 सेकंड में खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट विल टेक समटाइम्स सम इयर्स ऑफ लाइक 10 years 20 years भी लगेगा, सम एलिमेंट्स आर देयर। बाद में 10 years के उसका लाइफ स्पैन उतना ही है, उतना तक के बाद टूट जाएगा। अगेन दैट स्मॉल एलिमेंट अगेन 10-15 years के बाद अगेन टूट जाएगा, ऑटोमेटिक वाला, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फिजन बोलते हैं। एंड दैट कम्स अंडर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके, दैट दे डिलीटेड। ओके, हम लोग दूसरे एलिमेंट्स आर देयर, वो फिजन नहीं होगा, हैप्पी है। हम लोग एक्सटर्नली वी आर मेकिंग सम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टू इंसर्ट इनटू दैट एंड मेकिंग द फिजन टू हैपन। ओके, देखेंगे तो लिखो, स्पॉन्टेनियस फिजन अकर्स बाय इटसेल्फ, वो अपने आप अकर होगा। एंड इंड्यूस्ड फिजन, दिस वन वी आर स्टडीइंग, दिस वन वी आर स्टडीइंग। इंड्यूस्ड फिजन मींस वी आर फिजन इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन, वी आर इंसर्टिंग ए न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट में, उसके वजह से फिजन विल स्टार्ट, टूटना शुरू कर देगा, नहीं तो नहीं टूटेगा वो, इंड्यूस्ड फिजन। तो कैसा होगा विल सी। ओके डन, चलो नाउ इधर क्या होगा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन फिजन इज दिस वन। नाउ इधर देखो, एक न्यूट्रॉन है, दिस इज यूरेनियम, ओके, यूरेनियम 92 235 लिया, यूरेनियम। ओके, इसमें न्यूक्लियन नंबर कितना है, न्यूक्लियर नंबर इज 235, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों मिलके 235 है। एंड दिस इज अ न्यूट्रॉन, ओके, दिस इज स्लो न्यूट्रॉन, स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन, स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको, और वी कॉल्ड एज थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन। एंड थर्मल न्यूट्रॉन का एनर्जी विल बी 0 अप्रोक्सीमेटली 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी लो एनर्जी वाला थर्मल न्यूट्रॉन वी हैव टू इंसर्ट, अदरवाइज क्या होगा, वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वी हैव टू इंसर्ट वेरी स्लो एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम। Now when the neutron is inserted, I'm talking about nuclei, nuclei के बारे में बात कर रहे हैं ना, when the neutron is inserted into uranium, now tell me what will be the mass number will be, how much uranium का mass number will be, atomic number तो same है, because I'm inserting the neutrons, right, so it will be 236 बन जाएगा। ये 236 बनने के बाद इट इज अनस्टेबल, वो न्यूट्रॉन इधर उधर 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 जाएगा, पूरा डंबल शेप जैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये खराब करेगा, ये न्यूट्रॉन एक्सटर्नल वी आर इंसर्टिंग, राइट, खराब करके ये बाद में क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, सो मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके, दैट एनर्जी एक्चुअली वी आर यूजिंग इन heating water, it is converted into steam, and I'm passing through turbine and generator, it will start rotating and generating electricity, वो एनर्जी को वी आर हीटिंग, ओके, दैट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करने वाला है, ओके। एंड व्हेनेवर fission is happening, 3 neutrons will be coming out always, 3 neutrons will be coming out, okay. So this is happening in this one, and that 2 elements can be anything, ऐसा नहीं कि always same elements will be coming, same daughter nucleus will be coming, ऐसा नहीं है, okay. So मान लो for this example में it is barium, and here is example is krypton. So atomic number is 36 89, and इसका mass number is 56 144, a daughter nucleus can come. So splitting के हिसाब से एक ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ऐसा elements will be formed. This is a famous one fusion है, and 3 neutrons will be coming out and huge amount of energy is released. And here understood है ये वाला, अब देखो इसका न्यूट्रॉन, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, यूरेनियम लिया ना 92 235, एंड न्यूट्रॉन वी आर इंसर्टिंग 0 चार्ज एंड मास, राइट, 0 and 1 इंसर्ट करने से क्या होगा, 2 डॉटर न्यूक्लियस बेरियम एंड क्रिप्टॉन, and 3 neutrons are coming and huge amount of energy is released. And always, you know, atomic number of both sides should balance.
एंड मास नंबर शुड बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. सो दे विल गिव x इंस्टेड ऑफ दिस वन, दे विल गिव x, ऐसा बोलेगा. सो व्हाट इज x बोल के बोलेगा. सो वी हैव टू बैलेंस एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस ऑलवेज इक्वेट करने का. ओके, सो करना था ना. So 92 plus 0, 36 plus 3 into 0 is 0. And how much we have to add? Still 56 we have to add to get 92. Then x will be 56. ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है? We have to balance mass numbers also ऊपर. देखो 235 plus 1 is 236. 139 plus 94 plus 3 into 1. 3 into 1. So add करना पड़ेगा mass number पूरा. So balance should be there. And huge amount of energy is released. देखो इसमें क्या होगा, ये एनर्जी हम लोग कैसे सोच रहे हैं, बट एक्चुअली यू नो दिस वन आई टोल्ड यू, आई थिंक सो, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बोला ना. हिरोशिमा नागासाकी सुना है? बॉम्ब का क्या है वो, बोलो साथ में कुछ बोलो, उसका क्या है, क्या किया, थोड़ा देखा होगा ना छोटे से. हाँ, US dropped 2 atom bombs on in Japan. हाँ जापान में डाल दिया. वो लोग को भी नहीं मालूम एक्चुअली, इतना ब्लास्ट होगा बोल के नहीं मालूम. वो कितना केजी से मालूम है? 50 केजीज का यूरेनियम, ओनली 50 केजीज का यूरेनियम है, एक बॉक्स में रखा यूरेनियम. ओके, एंड उधर दे पुट ए न्यूट्रॉन हियर एंड दे पुट सम सर्क्यूट, ओके, इनसाइड इट. ओके, एंड द बॉक्स में लगा दिया एंड ऊपर से डाला, ऊपर से. दे थॉट दैट एरिया ब्लास्ट होगा, कुछ होगा बोल के, ऐसा नहीं होगा बोल के दे आल्सो डोंट नो. ओके, सो नीचे ड्रॉप करने समय ही दे पुट ए रिमोट कंट्रोल, ऐसा प्रेस किया. प्रेस करने से क्या होगा, दिस न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम को हिट किया, हिट किया. एंड इफ यू हिट दिस वन अगेन, यूरेनियम का 236 हो गया, अनस्टेबल हो गया, ब्लास्ट हो जाएगा. ब्लास्ट होके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. दैट एनर्जी ओनली ब्लास्ट ढाम बोल के आएगा पूरा. दिस इज नॉट ओनली वन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन न्यूक्लियस, वन एटम के बारे में बात कर रहे हैं. बट एक 50 केजीज ऑफ यूरेनियम में हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? Millions of atoms will be there. एक atom में so much of 200 mega, we will prove, we will get the question also. 200 mega electron volts of energy is getting released एक atom में. Like this एक 50 kgs का atom में कितना blast पूरा गया काम से इतना. And वो कौन डिस्कवर, कौन किया दिस इक्वेशंस? आइंस्टीन हैज डन. बाद में ब्लास्ट होने के बाद में वी हैव टू यूज एजुकेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव वेज, नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव वेज बोल के they started thinking in other way and they put the bond agreement will be there, right? We should not use that all things waste. और यूज करने तो यूज में यूज करो, इधर हमारा ऊपर क्यों डाल रहे हैं बोल के they bonded and then they started thinking this energy को क्या करेंगे बोल के. Then they got the idea of generation powers बोल के, generating powers. and इतना यूरेनियम एक्चुअली हमारे अर्थ में वेरी लेस है, वो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं. they are doing research in NASA वगैरह में also. Whenever they want to see, they are taking the samples, right? Why? Uranium मिल गया तो अच्छा है बोल के, they will generate electricity. Okay, they'll send and they'll started digging there and they'll bring the uranium बोल के. Okay, that's what happening. Uranium is required for us. Okay, but इसमें बहुत प्रॉब्लम है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ना, बहुत प्रॉब्लम है. वो लोग क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी है रिलीज हो गया, लास्ट में ये वेस्टेज विल बी देयर, सो मच वेस्टेज विल बी देयर. वो किधर रखेगा? What will put, where to throw? अगर they started throwing in the digging करके अर्थ में डाल रहे तो पूरा सॉइल खराब करके उस एरिया पूरा जो पानी पी रहे हैं वो मर गया, ऐसा हो रहा है. देन क्या करेंगे? they thought to take these boxes वगैरह में, मतलब किधर लेके अदर प्लैनेट में डालेंगे बोल के they thought. बट अगेन दे पोल्यूशन सब कुछ करके उधर भी पोल्यूशन क्यों खराब करने का, पूरा सत्रल हो जाएगा उस प्लैनेट में, जो भी प्लैनेट में डाल रहे हैं. मून में डाल दिया तो कल पूरा मून पूरा कैसा हो गया पता नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा. So what they are doing, presently they are doing lead box will be there. Lead box will be there. They are putting inside that lead box and putting the inside the earth crust only in that particular area में. They are putting inside the earth crust. उसमें क्या होगा, एक एक यूरेनियम का मतलब आपका ये जो एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आते हैं, राइट, उसका लाइफ स्पैन होगा एक 5 years होगा, 10 years होगा. उसके बाद उसका सब्सटेंस गया काम से, उसका प्रॉपर्टी चले जाएगा, वो ब्रेक होके वगैरह होके वो प्रॉपर्टी चले जाएगा उसका. सो तब तक वो लोग बॉक्स में रखेंगे, देखेंगे बोल के दे आर पुटिंग ऑल दिस बॉक्सेस इनसाइड द अर्थ सरफेस का प्रेजेंटली उस पर्टिकुलर एरिया में. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस न्यूक्लियर फिजन में. बहुत इंपॉर्टेंट है वाला फिजन का. ओके, चलो, एनर्जी इन फिजन. एनर्जी इन फिजन विल कैलकुलेट एनर्जी इन फिजन. ओके, मान लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी वी वांट टू कैलकुलेट. सपोज मान लो आपको एक्स फिजन हो रहा है ना, एक्स पेरेंट है न्यूक्लियर,
इट इज स्प्लिटिंग इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस y प्लस z मान लो, टू डॉटर न्यूक्लियस. वी आर कैलकुलेटिंग कितना बाइंडिंग एनर्जी है, कितना मास डिफेक्ट है, कैसा है, वी आर कैलकुलेटिंग. ओके, mass number of the uranium is how much? Uranium mass number is how much? 235. 235. But generally calculation easy होने के लिए I will take 240. बाद में कितना एनर्जी है थोड़ा कम कम डाल देंगे. ओके, कैलकुलेशन इज वेल. Now tell me, mass number is 240 and I told you daughter nucleus are comparable to mass approximately. So I am taking 120, 120. See, आपको एग्जाम में ऐसा देगा, they will give the mass numbers ऐसा split होकर equation देगा. They will tell to calculate the binding energy वगैरह. They will tell to calculate. We'll see. So binding energy per nucleon also will be given to you. Binding energy per nucleon. Tell me, binding energy per nucleon exam में they given as 7.6 mega electron volts they given. And इसका 8.5 mega electron volts is given. And here also 8.5 mega electron volts is given. They'll give these two data, binding energy per nucleon. Now calculate total binding energy. Tell me, binding energy कितना होगा? A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा each element को. A से मल्टीप्लाई किया तो will get binding energy, because binding energy per nucleon value is 1. Nucleon number से मल्टीप्लाई किया तो will get the binding energy. So मल्टीप्लाई किया तो here 1824 आएगा, and if you multiply here 1020 आएगा and 1020 आएगा. Okay, so binding energy and mass number will be given to you. You have to calculate this one. I want to calculate कितना energy release हो रहा है. I want to calculate in this process में कितना energy getting released. Okay, so energy released. How to calculate energy released? Tell me. इसका total energy minus इसका total energy calculate किया तो we'll get the total energy get released, right? So कितना होगा? This is 2040 minus 1824. कितना calculate करो? Energy released 2040 minus 1824. कितना? 116. No, one always first number you will tell wrong. 216 mega electron volts. Okay, now this 216 mega electron volts, since I took 240 but थोड़ा 235 है ना, approximately कितना देगा? 200 mega electron volts of energy का. देखो 2 mega is 10 power of 6. 200 mega electron volts is coming. This is for what? लिखो, one nuclei of uranium 235 gives 200 mega electron volts of energy per fission. देखो क्या होगा, देखो इफ यू अंडरस्टैंड केयरफुली, दिस इज अ यूरेनियम. यूरेनियम में so many atoms are there. मैं क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को एक एटम को हिट करेगा ना, एक न्यूट्रॉन एक एटम यूरेनियम एटम को हिट करेगा. क्या होगा प्रोसेस, ये टूट जाएगा डॉटर न्यूक्लियस एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग आउट, राइट, एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट 3 न्यूट्रॉन्स इस एटम को हिट करेगा, इस एटम को हिट करेगा, इस एटम को हिट करेगा, and again fission will happen, again break हो जाएगा, again release of energy and 3 neutrons are coming, इधर भी 3 ऐसा हिट करके so much big blast हुआ, इतना blast. ऊपर देखने से आपको some videos will be there, you see that thing, so much पूरा उड़ जाएगा. वो लोग जाने के बाद अरे क्या हुआ रे, क्यों डाला बोल के वो लोग डर गया. उतना अच्छा मतलब they will show that blasting वाला में. Okay, so per one nuclei, one atom का I'm talking, एक एटम को हिट करने से ब्लास्ट होगा ना, कितना एनर्जी? 200 mega electron volt, 10 power of 6. That much energy is getting released, one atom ka. You can imagine one piece if you take, that's why you can use as a bombs also, but don't use like bombs again. Okay, chala. Energy released per nucleus of the thing, how much you got? 200 mega electron volts, right? Now देखो, how much mass disappear per fission will calculate. How much mass disappear? Tell me, energy का formula क्या है? Delta M into 931.5 mega electron volts. Energy you got as 200 mega electron volts. Delta M we want to calculate 931.5 mega electron volts. Therefore, delta M will be approximately, if you calculate, you will get 0.23 AMU. देखो, we are talking about one atom के बारे में बात कर रहे हैं. One atom में mass defect कितना हो रहा है? 0.23 AMU. इतना only small mass defect. Now, if you to get थोड़ा फील होने के लिए आपको क्या करेंगे, देखो, परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपियर.
परसेंटेज ऑफ मास दैट डिसअपियर, टेल मी उसका क्या होगा, डेल्टा एम बाय टोटल मास इंटू 100, मतलब कितना परसेंटेज आपको मास डिफेक्ट हो रहा है, ये 0.23 मीन्स कितना परसेंटेज में, सो 0.23 बाय टोटल मास इज 235 into 100, so you will get approximately as 0.1%. मतलब 0.1% mass is getting disappear and 200 mega electron volts of energy is getting released per one atom का. Okay, that is a per fission. Okay, the मतलब exam में they'll give the two data, they'll calculate the mass defect तक they will tell to calculate. और इसका थोड़ा चेन रिएक्शन एंड इसका न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आल्सो वी आर लर्निंग नेक्स्ट क्लास में करके, देन न्यूक्लियर फ्यूजन. सो टुमारो मैक्सिमम विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर.